A very fresh good morning to one and all. I am Manisha Arora. Welcome to you all in our general knowledge class. How are you children? I hope you all are fine and fit. Today we are going to read the chapter 13, Loved by All, Popsicle. Chapter 14, Food Quiz. Chapter 15, Let's Cook. And chapter 16, Keeping Clean. So let's start. First of all, we are moving towards the chapter 13, Loved by All, Popsicle. What do you need to beat the heat during hot summer? Bring peppy and flavorful popsicles. Did you know that a child invented this treat by mistake? In this hot weather, you like to eat popsicle, candy, आइसक्रीम्स. पता है आपको इस popsicle का इन्वेंट किसने किया था? एक चाइल्ड ने बाय मिस्टेक, एंड दैट चाइल्ड वॉज फ्रैंक एपर्सन. Frank Epperson, an 11 years old boy, was mixing a white powdered flavoring for soda left on the porch with a stirring stick overnight. When he woke up the next morning, the soda was frozen around the stirring stick. Yes, amazing frozen sweet stuff, and he called it the एप्सिकल. फ्रैंक एपर्सन ने एक फ्लेवर्ड पाउडर को सोडा के साथ मिक्स करके बाहर पोर्च में पूरी नाइट के लिए छोड़ दिया. जब वो मॉर्निंग में उठा तो वो जो मिक्स पाउडर था सोडा के साथ वो स्टीरिंग स्टिक के चारों तरफ फ्रीज हो गया और बहुत टेस्टी सा स्वीट सा स्टफ बन गया. उसने इसको क्या नेम दिया? एप्सिकल. द फर्स्ट कस्टमर्स टू बाय Epsicles were Epperson's classmate. Epperson Francisco, the lucky kid, applied for a patent for his discovery after 19 years. He renamed it to Popsicle. The new aged Popsicle takes the genre of iced desserts to a whole new level with exotic fruits and spectacular flavor combinations. आपको पता है जो एपर्सन का क्लासमेट था, सबसे पहले उसने इसको बाय किया था एपर्सन से, और एपर्सन ने इसका पेटेंट कब करवाया? 19 ईयर्स के बाद, क्योंकि उसने इसकी डिस्कवरी की थी तो अपने नाम का पेटेंट उसने 19 ईयर्स के बाद, मीन्स वो जब 30 ईयर्स का था तो उसने ये पेटेंट करवाया कि उसकी डिस्कवरी एपर्सन फ्रांसिस्को ने की है, और उसने इसको क्या नेम दिया? पॉप्सिकल. नाउ question answers. First question is, when was Frank Epperson born? 1894. Question 2, what is a popsicle made out of? Ice, sugar syrup and edible colors. Why? By what name do we know popsicle in India? इंडिया में हम popsicle को किस नाम से जानते हैं? चुस्की. What is your most favorite flavor of popsicle? Orange, rose, etc. You can write the flavor of your choice. Now we are moving towards the next chapter, chapter 14, Food Quiz. Which type of cooking is the most unhealthy one? Deep fried. Deep fried cooking is most unhealthy one because it is harmful for our health and it increases our cholesterol level. Is eating just before sleeping healthy or unhealthy? Just before sleeping, eating is unhealthy because we can't intake sufficient water to digest the food. So हमको सोने से कम 2 आवर्स पहले अपना मील ले लेना चाहिए, जिससे कि हम वाटर इनटेक कर सकते हैं अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. How can you make a fruit ripen faster? Keeping alongside bananas. Which fatty food has no cholesterol? Avocado. You can see the picture of avocado. It is cholesterol less. It has no cholesterol. What type of salt has all the minerals and no toxins? Rock salt. Rock salt has all the minerals but no toxin. It is very healthy for our body, so use the rock salt with normal salt. What do you mean by rock salt? In normal language, we
सेंधा नमक. Now question number 6. Is saffron a spice or a vegetable? Saffron is a spice. What are prunes? Dried plums. जो prunes होते हैं, you can see the picture of prunes. These are prunes. जो prunes होते हैं वो dried plums होते हैं. जब plums dry हो जाते हैं तो हम उनको prunes बोलते हैं. ये एक dry fruit बन जाता है. So dried आलू बुखारा are called prunes. What is the terms used for vegetables, fruits, nuts, grains, herbs and spices used in cooking known as ingredients? जब हम कुकिंग करते हैं तो उसमें जो हम थिंग्स यूज़ करते हैं जैसे फ्रूट, नट्स, स्पाइसेस, ऑयल, तो हम उनको क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स. What are the fruit preserver made from citrus fruits, sugar and water known as? जब वाटर, साइट्रस फ्रूट्स एंड शुगर से एक मिक्स थिंग बनाई जाती है प्रिजर्वेटिव्स डाल के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्मलेड. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मार्मलेड. वी कैन ईट इट विद द ब्रेड एंड विद अदर कुकिंग एडिबल आइटम्स. सो मार्मलेड इज अ जैम. यू कैन ईट इट विद द ब्रेड और with other food items. Do you agree that cooking food often transforms its chemical constituents? Yes, cooking food often transforms its chemical constituents. Now we are moving towards the chapter 15. Let's cook Monaco snacks. This chapter is related to a Monaco snacks. Cut the cheese slice into pieces smaller than the Monaco biscuits. Cut cottage cheese into small square pieces. Chop pineapple slices into small pieces. Place some Monaco biscuits in serving tray. Now keep a piece of cheese followed by cottage cheese and pineapple on the biscuit. Pierce a toothpick through all the ingredients in the center and enjoy the snack. मोनिको बिस्किट्स के ऊपर आप चीज़ स्लाइस, फिर चीज़, कॉटेज चीज़ के पीसेज एंड पाइनएप्पल चीज़ के पीसेज रख के उसको टूथपिक के साथ फिक्स करके अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं. सो यू कैन ट्राई इट एट योर होम. नाउ कीपिंग क्लीन. एज यू ऑल नो वी शुड कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन. दिस इज अ गेम. यू कैन एंजॉय इट एट योर होम विद अ डाइस. You can play it with your friends or siblings. So we should keep our environment clean by plant more trees. We should boil the water. We should throw the garbage in the dustbin. We should cover the food. We should clean our cooler, etc. So it is all about the chapter 13, 14, 15 and 16. Do the chapter 13 and 14 in your book only, and chapter 15 and 16 you can enjoy at your home and draw and color a popsicle in your notebook. Thank you. Have a nice day.